welcome back to my channel Let's Dissect Anatomy. Today we are going to discuss a very small topic but very important one, pterygopalatine fossa, which can be asked as a short note. So let's start. Introduction. It's a pyramidal shaped small space situated deeply below the apex of the orbit between the pterygoid process of sphenoid behind and perpendicular plate of palatine in front. From the picture you can see it's an inverted teardrop shaped space between the bones. आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में ये वाला स्पेस, राइट. सो ये है लेटरल टेरिगोइड प्लेट और यहाँ पे आगे आएगा पैलेटाइन बोन. मैक्सिला के पीछे यहाँ पे पैलेटाइन बोन आएगा, तो दोनों के बीच में एक स्पेस दिखेगा ऐसे इन्वर्टेड टीयर ड्रॉप लाइक. ओके, सो दैट इज द pterygopalatine fossa. First of all, the boundaries. Before we'll discuss the boundaries, you can concentrate on the picture. Here you can see the zygomatic arch and ramus of the mandible are cut to expose this fossa. So here you can see that bones are marked by the different colors. This is the purple color maxilla, this is the lateral pterygoid plate, this one is greater wing of sphenoid, okay, and this blue color part, it is the palatine bone, right. So now the boundaries. The wall of the pterygopalatine fossa are formed by the parts of the palatine, maxilla and sphenoid bone. ये तीनों bone से उसकी wall बनती है. So first of all, the anterior wall. So anterior wall is formed by the posterior surface of maxilla. So here you can see this one. Then the medial wall, मतलब अंदर की तरफ. So blue color का bone है, that a perpendicular plate of the palatine bone forms the medial wall. Then posterior wall and roof. This is posterior wall and this is roof. So both are formed by the sphenoid bone. The posterior one, this one is the lateral pterygoid plate, or you can say process, and this roof is formed by the greater wing of sphenoid, and the floor is formed by the union of the anterior and posterior wall. Okay, so these are the boundaries of the pterygopalatine fossa. Here is the another diagram. Here you can see this is the pterygopalatine fossa. Okay, so anterior boundary, posterior boundary, medial boundary and roof and floor. So here you can see medial wall, it is formed by the perpendicular plate of the palatine bone. The posterior wall, it is formed by the pterygoid process, and the anterior wall is formed by the posterior surface of the maxilla. Communications. So first of all, anteriorly it communicates with the orbit through medial end of the inferior orbital fissure. So आगे की तरफ anteriorly वो कहाँ से communicate करता है, तो orbit के साथ communicate करता है through inferior orbital fissure. Now posteriorly it communicates with the three structures. The one is medial cranial fossa. एक मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू फोरामेन रोटंडम. दूसरा, इट कम्युनिकेट्स विद द फोरामेन लेसरम थ्रू टेरिगोइड कैनाल और वीडियन कैनाल. द थर्ड कम्युनिकेशन इज विद फेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स थ्रू पैलेटोवेजाइनल कैनाल. तो पीछे की तरफ ये तीन स्ट्रक्चर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, मिडिल क्रेनियल फोसा, फोरामेन लेसरम एंड फेरिंग्स. मीडियली इट कम्युनिकेट्स अंदर की तरफ, इट कम्युनिकेट्स विद द नोज थ्रू स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन. बाहर की तरफ लेटरली दिस फोसा कम्युनिकेट्स विद द
infratemporal fossa through pterygomaxillary fissure. If you remember the communication of infratemporal fossa, तो infratemporal fossa lateral बाहर की तरफ है, तो उसमें उसकी मीडियल बाउंड्री में, मीडियल कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा या वीडियो में देखा होगा कि मीडियली इट कम्युनिकेट्स विद द टेरिगोपैलेटाइन फोसा। तो अब टेरिगोपैलेटाइन की लेटरल कम्युनिकेशन में आएगा इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ओके, inferiorly it communicates with the oral cavity through greater and lesser palatine canals। आप communications ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, और this is the another way you can draw this। So here you can see this is the pterygopalatine fossa। Anteriorly it communicates with the orbit through infraorbital fissure। Posteriorly वो तीन स्ट्रक्चर के साथ कम्युनिकेट करता है। One is middle cranial fossa through foramen rotundum, another is nasopharynx or pharynx through this one palatovaginal canal, and third is with foramen lacerum through Vidian canal or pterygoid canal. Okay, then medially it communicates with the nasal cavity through sphenopalatine foramen। फिर laterally it communicates with the infratemporal fossa through pterygomaxillary fissure, and below means inferiorly it communicates with the oral cavity through greater and lesser palatine canal। Okay, so you can draw this picture in the exam as well। Now the contents of the pterygopalatine fossa, the three contents are there. The one is third part of the pterygopalatine part, means third part of the maxillary artery. Then second content is maxillary nerve and its branches, and third part is pterygopalatine ganglion and its branches। So maxillary artery we have already discussed in detail in previous video of infratemporal fossa, which is a very important short note or long question। Then second one is the maxillary nerve। Okay, so here you can see from the picture, this is the maxillary artery, this is the maxillary nerve, and this smaller one is the sphenopalatine or pterygopalatine ganglion। So maxillary artery we have discussed. Now the maxillary nerve, it is the second division of the trigeminal nerve and it is purely sensory। trigeminal nerve के three divisions आपको याद है होंगे, तो one is ophthalmic, another is maxillary, and third is mandibular nerve। So this is the second division of the trigeminal nerve, which is purely sensory। It originates from the trigeminal ganglion in the cranial cavity। If you remember the video of middle cranial fossa where I have shown you the trigeminal impression, वहाँ पे होता है trigeminal ganglion। So वहाँ से maxillary nerve निकलती है in the middle cranial fossa, it exits the middle cranial fossa and then it enters the pterygopalatine fossa through foramen rotundum। So if you remember, I have shown you the foramen rotundum as well in the middle cranial fossa, where I have told you it passes only one structure, that is maxillary nerve। तो middle cranial fossa में से वो pterygopalatine fossa में जाएगी through foramen rotundum। Then it further goes forward and it exits as a infraorbital nerve through infraorbital fissure। फिर वो आगे जाके pterygopalatine fossa में से infraorbital fissure के थ्रू आगे की तरफ जाएगी, तब उसका नाम हो जाएगा infraorbital nerve। It runs along the floor of the orbit। ऑर्बिट का जो फ्लोर है वहाँ नीचे एक इंफ्राऑर्बिटल कैनाल होती है, वहाँ कैनाल में से पास होते हुए it appears on the face through infraorbital foramen। So if you remember the infraorbital foramen, which is situated just below the infraorbital margin, so we ultimately last में वो infraorbital foramen में से बाहर निकलती है, then it is called infraorbital nerve। It gives the sensory fibers to the skin of the face, the side of the nose and the upper lip। It supplies the upper molar mucous membrane of the buccal surface
of the associated alveolar process and the lining of the maxillary sinus. So these are the area of distributions of maxillary nerve. So किसकी ब्रांच है, उसका कोर्स कहाँ पे है, फिर वो कौन से एरिया को सप्लाई करती है, वो सब इसमें आ गया है. नाउ द ब्रांचेस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. जब वो मिडल क्रिनल फोसा में है तो कौन सी ब्रांच है, फिर उसके बाद वो टेरिगोपैलेटाइन फोसा में एंटर होती है तो वहाँ कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर वो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में जाती है तब कौन सी ब्रांच निकलती है, और अल्टीमेटली वो फेस में इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन के थ्रू बाहर निकलती है तब कौन कौन सी ब्रांचेस है. ओके, सो इन द मिडल कैनल फोसा इट गिव्स द मेनिंजियल ब्रांच, ओनली वन ब्रांच. हियर यू कैन सी while it is in the middle canal fossa, it has a one branch only. This is meningeal branch. Then in the pterygopalatine fossa, it gives 3 branches: ganglionic branch, posterior superior alveolar branch, and zygomatic branch. So you can see here, this is the zygomatic branch, this is the posterior superior alveolar branch, and the third one, this one, these are the ganglionic branch. जब वो टेरिगोपैलेटाइन फोसा में है, अब वो एंटर होगी कहाँ पे, यहाँ पे, मीन्स इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में, तो वहाँ पे कौन सी ब्रांचेस है, मिडल सुपीरियर एल्वेलर नर्व एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्वेलर नर्व. पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर टेरिगोपैलेटाइन फोसा में है, एंड एंटीरियर एंड मिडल इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में है. सो हियर यू कैन सी दिस वन इज एंटीरियर सुपीरियर एल्वेलर नर्व एंड दिस वन इज मिडल सुपीरियर एल्वेलर नर्व व्हाइल इट इज इन दी कैनाल. अब अल्टीमेटली कहाँ से बाहर निकलेगी, इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन में से फेस पे अपीयर होगी. तो उस टाइम पे कौन सी ब्रांचेस हैं, तो पाल्पेब्रल ब्रांच है और एक नेजल ब्रांच है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस इज द नेजल ब्रांच, these are the nasal branch, and this one is the palpebral branch. Okay, so these are the branches of the maxillary nerve. तो किसकी ब्रांच है वो, कहाँ से डेवलप होती है, कौन कौन से एरिया में से पास होती है, द कोर्स, the area of distribution and its branches. Now the third content is pterygopalatine ganglion. It is also known as the ganglion pterygopalatinum or Meckel's ganglion or nasal ganglion or spinopalatine ganglion or ganglion of hay fever. So बहुत सारे नाम है उसके. The largest of 4 parasympathetic ganglia in the head. टोटल 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है अपने हेड में. तो इफ यू रिमेंबर द रिमेनिंग पैरासिम्पैथिक गैंग्लियन, द फर्स्ट वन दिस इज द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, द सेकेंड वन इट इज द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, थर्ड वन इट इज द ओटिक गैंग्लियन, एंड द फोर्थ वन is ciliary ganglion. Okay, so these are the 4 parasympathetic ganglia in the head, which can be helpful in the one-liner or a viva question. Okay, and out of this 4, this pterygopalatine ganglion is the largest one. It serves as a relay stations for the secretomotor fibers to the lacrimal gland and mucous glands of the nose, palate, pharynx and paranasal sinuses. तो ये सारी जगह पे सिक्रेशन का काम करता है उसका स्टिमुलेशन. क्लिनिकल कोरिलेशंस, द एलर्जिक कंडीशंस लाइक hay fever or you can say common cold which cause the irritations of this pterygopalatine ganglion and causes the congestions of the glands of the nose. जो नोज ब्लॉक हो जाता है ना सर्दी में, वही है. पैलेट एंड लैक्रिमल ग्लैंड, वो सभी जगह पे वो कंजेशन हो जाता है. सब्सिक्वेंटली the individual suffers from the running nose and eyes. आँख में से और नोज में से पानी निकलने लगता है because of the
irritation of this ganglion, and for this reason this pterygopalatine ganglion is also called a ganglion of hay fever. Hay fever means common cold. The common cold के लिए responsible ganglia है, इसलिए it is known as the ganglion of the hay fever. Okay, so that is all about the pterygopalatine fossa. Hope you like this video, and if you like, you can hit the like button, subscribe and press the bell icon and share it to your friends. See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you.